Class, today we are taking lens maker formula. So in lens maker formula we are taking here convex lens and object is our point object. So here first when incident ray will travel in this way, and this is the only that lens. Here I have taken two circle because that we can understand very easily where the center of curvature and radius of curvature of these surfaces are there. So whenever you will make a diagram, so no need to make these two circles, only try to understand. So it is the reason I have taken these two circles. Now from this object point, incident ray is coming in this way, in this direction. It strike at point A. This is the surface 1, and this surface 1, it is the part of this sphere. So it means center of curvature for this sphere is here C1. So you will take radius of curvature in this way, okay. And then here ray is traveling. Now after refraction, ray is traveling here. Suppose this surface was not there, so then it will go directly in this way and here image will form I dash. But now here again refraction phenomena is taking place. So now emergent ray is reaches here. So final image is forming I at this point, okay. So this I dash is acting as a virtual object for this secondary surface, and this secondary surface whose radius of curvature is left hand side, and so center of curvature is in left hand side, so radius of curvature also in this side. Now how will we do derivation learning point? For this surface we will write formula n upon v minus 1 upon u is equal to n minus 1 upon r. Here n1 is the refractive index of your rarer department, rarer, and n2 is the your this one, okay. So now here we will write n2 upon v dash minus n1 upon u is equal to n2 minus n1 upon r1 for first surface. Second surface we will take n2 n1 upon v minus n2 upon v dash minus t is equal to n1 minus n2. now see please learning point, यहाँ n2 शुरू होता है, यहाँ n1 आता है, यहाँ n1 है, यहाँ n2 हो रहा है, और यहाँ n2 माइनस n1 है तो यहाँ n1 माइनस n2 आ गया है, यहाँ r1 है, यहाँ r2 है, यहाँ v डैश था, यहाँ फाइनल इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह हमने v डैश माइनस टी लिखा है. फिर we will write कि it is very very thin lens, so we can neglect this t part, so it will come n2 upon v dash, okay, n1 minus n2 upon r2. If we will add these two equation, we will get equation n1 upon v minus n2 upon n1 upon u is equal to n2 minus n1 1 upon r1 minus r. So divide by n1 completely. Here 1 upon v minus 1 upon u is equal to n2 upon n1 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2. And n2 upon n1 we can write refractive index of second media with respect to 1. Simply say n minus 1 bracket में 1 upon r1 minus 1 upon r2. So it is the 1 upon v minus 1 upon u. When object is kept at infinity place, infinity distance, then image will form focus. So then 1 upon f minus 1 upon infinity is equal to n minus 1 bracket में 1 upon r1 minus 1 upon r2. So this is the lens maker formula. This lens maker formula is showing कि focal length of lens is depending this refractive index as well as the radius of curvature of these two surfaces. First we will discuss depending upon refractive index, okay. So for this here we are taking three cases. First cases I am taking, suppose when we are immersing this lens in a liquid whose refractive index is less than refractive index of glass. For example 1.5, and suppose we are immersing in water to 1.33. So then we will see कि how that focal length will vary. You will substitute here value. Now initially it was in air, but when we are immersing in a liquid, so then refractive index of glass with respect to liquid will come, okay. Now we want to see what focal length of in the liquid will come. So here we are dividing. So 1 upon fa, 1 upon fl divide, so then it will come fl upon fa. It will come in this way. Now here in this situation,
हमारा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है इन कंपेयर टू लिक्विड, तो इट विल कम ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 से मल्टीप्लाई करने के मतलब जब आप एफ ए को इधर लेके आओगे तो एफ ए को यू विल मल्टीप्लाई मोर देन 1, तो इट मीन्स एफ एल विल बी मोर. It means whenever you will immerse in a lens in a water or such type liquid whose refractive index is less than if air, that is 1.5, so then positive here, nature will not change. Suppose convex lens तो convex ही रहेगा, concave है तो concave ही रहेगा, but FL is greater than, it means now focal length जो numerical value है that will be increase. Okay, now second case we are taking, if suppose both रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें हमने डाला है और ग्लास का दोनों ही सेम है, 1.5 ये भी है, 1.5 ये भी है. इन दिस सिचुएशन 1.5 1.5, तो इट मीन्स नाउ हियर we are taking this will become 1.5 upon 1.5 upon 1, so 1 minus 1 it will come 0. It means focal length will come infinite. ये बिल्कुल जो लेंस को हमने जैसे ऐसे लिक्विड में डाला तो ये ट्रांसपेरेंट प्लेट की तरह काम करेगा, यानी हमको दिखाई नहीं देगा कि इस लिक्विड में कोई चीज़ हमने कोई लेंस डाला हुआ है. ओके, नाउ थर्ड केस, व्हेन वी आर टेकिंग लिक्विड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन ग्लास, तो देन इन दिस सिचुएशन it will come less than 1. so here less than 1 का मतलब है नेगेटिव आएगा. it means now nature will change. पॉजिटिव है मतलब कॉन्वेक्स है तो वो कॉनकेव की तरह काम करेगा, और कॉनकेव है तो वो कॉन्वेक्स की तरह काम करेगा. अगर ओरिजिनल कॉन्वेक्स था तो वो बिहेव कैसा करेगा, कॉनकेव लेंस की तरह काम करेगा. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें एयर बबल का, उसकी सरफेस कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है, और जब हम वाटर में डालते हैं तो वाटर में एयर बबल 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर में डाल रहे हैं 1.33, तो जैसे इसको उसमें देखते हैं तो ये कैसी दिखाई देता है हमें, एज ए कॉनकेव उसमें दिखाई देता है. सो दीज आर द 3.3 केसेस वी आर टेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू रिलेटेड. नाउ वी आर टेकिंग रेडियाई ऑफ कर्वेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है. तो डबल कॉन्वेक्स के लिए इन दिस डायग्राम अगेन कम हियर, दिस इज द फर्स्ट सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन दिस साइड, इट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर इज पॉजिटिव फर्स्ट सरफेस की. सेकंड सरफेस के लिए आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो नेगेटिव है. सो इन दिस केस 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2. So in this it will come n minus 1 1/r1 plus 1/r2. अगर डबल कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लिखा है we will use this formula. If suppose double concave lens, तो here this pole P1 we will measure in this side, यानी R1 is negative, now R2 is positive. It means now this general formula n minus 1 minus 1/r1 minus 1/r2 minus you can take common, so n minus 1 इन ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/r2, दोनों सेम है, लेकिन यहाँ फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी, यहाँ फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी. आई होप सो यू अंडरस्टूड. थैंक यू.